Welcome everyone in lecture number 19. In my last lecture, I have told you how to construct confidence interval using T statistics when sigma is not known, where sigma is population standard deviation. And we have also done how to construct confidence interval for population proportion using Z statistic. So now today we will do how to estimate the population variance. Sometimes in statistical analysis, the researcher is more interested in population variance than in population mean or population proportion. For example, in the total quality movement, suppliers who want to earn world-class supplier status or even those who wants to maintain customer contracts are often asked to show continual reduction of variation on supplied parts. जो सप्लायर्स होते हैं मतलब जिन्हें वर्ल्ड क्लास सप्लायर्स का स्टेटस चाहिए उनसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप जो पार्ट सप्लाई करते हो उनमें कोई वेरिएशंस तो नहीं है, उनमें रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंटिन्यूस. अगर उसमें कंटिन्यूस रिडक्शन है मतलब वो पार्ट्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पार्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब कोई पार्ट्स छोटा बड़ा नहीं है, तो ऑर्डर्स ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही मिलते हैं. इसी तरह estimating the variance is very important in many other instances in business. For example, variation between airplane altimeter readings needs to be minimal. It is not enough just to know that on the average a particular brand of altimeter produces the correct altitude. It is also important the variation between instruments be small. So measuring the variation of altimeter is critical. Parts being used in engines must fit tightly on a consistent basis. A wide variability among parts can result in a part that is too large to fit into its slot or so small that it results in too much tolerance, which causes vibrations. How can variance be estimated? तो ये एक एग्जाम्पल है एयरप्लेन के एल्टीमीटर का जहां पर इसकी रीडिंग्स मिनिमल होनी चाहिए. तो उसकी रीडिंग्स का एवरेज पता होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके पार्ट्स में जो वेरिएशन है वो भी बहुत कम होना चाहिए. अगर उसके पार्ट्स में वेरिएशन होगा मतलब कोई पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है जो स्लॉट में फिट ही नहीं हो पा रहा है या बहुत स्मॉल है, तो it will create tolerance and vibrations. तो altimeter की रीडिंग may be increased due to that. तो we have to minimize here the variance between in the parts of the airplane. So here is the importance of variance. तो sample variance is calculated by using this formula. किसी भी sample की variance हम इस तरह calculate करते हैं. Or estimating the population variance from sample variance is similar to the estimation of population mean from sample mean. Relationship of the sample variance to the population variance is obtained by chi-square distribution. कोई भी relation निकालने के लिए between these two means population variance and sample variance, we need a formula. We need a relationship between two. So that relationship is obtained by chi-square distribution. If we take the sample variance and multiply it by n-1 and divide the whole quantity by sigma square, then this formula gives chi-square distribution. And the assumption is that the population from which the values are drawn is normally distributed.
This is a chi-square distribution. There is not one chi-square distribution. There are so many chi-square distributions depending upon the degree of freedom. As the degree of freedom changes, the shape of chi-square distribution also changes. Chi-square distribution is not symmetrical. Its shape will vary according to the degree of freedom. So chi-square formula for single variance is chi-square is equal to n minus 1 s square upon sigma square, where degree of freedom is n minus 1. Now we arrange this formula, means we solve this formula to find the value of sigma square, and thus we find the interval for population variance. So confidence interval to estimate population variance is n minus 1 s square upon chi square alpha by 2, and upper limit is n minus 1 s square upon chi square 1 minus alpha by 2, where degree of freedom is n minus 1. For example, suppose 8 7 centimeter aluminum cylinders in a sample are measured in diameter, resulting in the following values. 7 सेंटीमीटर डायमीटर क्लेम कर रहे हैं कि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सिलेंडर वो 7 सेंटीमीटर डायमीटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सैंपल में इस तरह का वेरिएशन हमें मिला है डायमीटर में. In estimating population variance from these values, the sample variance must be calculated. तो मैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए इंटरवल एस्टिमेट करना है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो किस रेंज में लाई कर रही है इन सिलेंडर्स की. तो जो डायमीटर में जो वेरिएशन है वो कितना है, तो उसके लिए सैंपल वेरिएंस फर्स्ट कैलकुलेट किया, तो दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0022125. ये आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, summation x minus x bar whole square divided by n minus 1. If a point estimate is all that is required, the point estimate is the sample variance. ये point estimate हो गया, means variation इतना है cylinders की diameter में. This is a point estimate. However, realizing that the point estimate will probably change from sample to sample, we want to construct an interval estimate. Point estimate ये इस sample के लिए है. आप कोई और sample लेंगे, point estimate change हो सकता है. तो it is better to construct an interval estimate. So we first find the degree of freedom, which is 7 here because there are 8 sample values. And we assume here that the population of cylinder diameter is not normally distributed. So we construct a 90% confidence interval. Suppose it is not given in the question, we are letting it as 90%, suppose. Then value of alpha is 0.1 and alpha by 2 is 0.05. This is a chi-square table. From the combination of degree of freedom and area in the right tail, this is the area in the right tail, upper tail. This is called the upper tail. You can have the value of chi-square. So here alpha by 2 is 0.05. In the confidence interval, here we have chi-square alpha by 2. It means area in the upper tail. So alpha by 2 is 0.05. So for 0.05, here you can see that it is a 0.05. And for 7 degree of freedom, the value of chi-square is 14.0671. You can see here. Chi-square alpha by 2 comma n minus 1. This is 7 is n minus 1 degree of freedom. Now chi-square alpha, this value, chi-square 1 minus alpha by 2. This is this area to the right hand side of this tail. Alpha by 2 means ये तो दोनों टेल्स का एरिया 0.05 है, तो आपने 0.05 दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस टेल के आगे वाला पूरा एरिया कितना हुआ, 0.95 हुआ द एरिया
beyond this 0.05. Okay, so chi square 1 minus alpha by 2 means 0.95. 0.95 is this area. So this value will comes when we see here 0.95 and 7 degree of freedom. So the answer is 2.16735. So whatever is the value of alpha by 2, divide it in the both tails. Then you just find the value of chi square by taking alpha by 2 here and degree of freedom here. So we'll get you this value. And to find this value, we find the area by subtracting this value from 1, so that we have this area, which is the area in the right side of this tail. This is the right tail. This value indicates actually the area to the right hand side of this distribution. This value, इस value के right hand side का area indicate करती है ये value. तो right hand side का area 0.95, इसलिए यहाँ 0.95 लिखा गया है. तो 0.95 अब आप देखेंगे टेबल में कहाँ पर है, और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2.16735 ये वैल्यू आएगी काई स्क्वायर की. तो यहाँ पर यह है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 और यहाँ पर है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2. ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड की है. तो सब्स्टिट्यूट की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में, तो हमें जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मिला वो ये मिला. पॉपुलेशन वेरिएंस 0.001101 से लेकर 0.007 के बीच में है इन सिलेंडर की डायमीटर की. में जो वेरिएशन है वो उतना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज the US Bureau of Labor Statistics publishes data on the hourly compensation cost for production workers in manufacturing for various countries. The latest figure published for Greece show that the average hourly wages for production worker in manufacturing is $16.10. Suppose the Business Council of Greece wants to know how consistent this figure is. US Bureau of Labor Statistics published data on hourly compensation cost for production workers. मतलब जो वर्कर्स हैं उनसे जो hourly काम लिया जाता है उनको कॉस्ट कंपेंसेशन कॉस्ट कितनी दी जाती है various in manufacturing for various countries. The latest figure published for Greece, एक कंट्री ने ये शो किया है कि एवरेज आर्ली वेजेस जो होते हैं प्रोडक्शन वर्कर के वो इतने डॉलर में होते हैं. अब ये फिगर कितना कंसिस्टेंट है ये पता करना है हमें. तो 25 प्रोडक्शन वर्कर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया गया और उनके आर्ली वेजेस का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया. अब हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है टू डेवलप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर द आर्ली वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्रीस. Assume that the hourly wages for production workers across the country in manufacturing are normally distributed, which is necessary to apply chi-square distribution. ये assumption बहुत ज़रूरी है. तो हमें सैंपल साइज 25 गिवन है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज S is $1.12. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कंस्ट्रक्ट करना है. ये एवरेज वैल्यू है जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए. तो S 1.12 है तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सैंपल वेरिएंस मिलेगा. This is a point estimate. You can consider this as a point estimate for population variance.
Sample size is 25, so degree of freedom is 24. 95% confidence means alpha is 0.05. Divide this value in each tail of chi-square distribution so that each tail will have 0.025 area. So now we will see, we will find chi-square 0.025, comma 24. This value is 30.3641. And then we find chi-square 0.975 because 1 minus 0.025 is 0.975. We look this area in the table and 24 degree of freedom. Chi-square value is 12.40115. So the confidence interval is this. Confidence interval for population variance. Thank you very much. If you liked my lecture, please share it and subscribe my channel for more new videos on this topic and statistics. Thank you very much.